students, good morning. Hope you will be fine at your respective places. Today we are going to discuss the effect of the ecological factor, और जो हमारे पास ecological factor जो हम उठाने वाले हैं, that is water. What is the role of water and what is the importance of water? वाटर की अगर हम बात करेंगे, वाटर इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट और वाटर इज द सेकंड मोस्ट वाइटल इकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द टेम्परेचर. इट इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेकंड मोस्ट वाइटल इकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द व्हाट वी कॉल एज टेम्परेचर. This water, it is very much essential for the survival of the organisms. ये भी देखा गया है, you must be know that this water जो हम देखते हैं कि it was in during this what we call as the origin of life, जो life origin हो गई on the earth, it first takes place on the water in the primitive earth. जो लाइफ पहले इवॉल्व हो गई, द ओरिजिन जो पहले लाइफ ओरिजिन हो गई, इवॉल्व हो गई, इट टेक्स प्लेस इन द वाटर ऑन द व्हाट वी कॉल एज अ प्रिमिटिव अर्थ. अराउंड 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज about 70% of the earth surface is covered by the water. ये का देखा गया है. एंड जो हम देखते हैं कि द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन. जो हम जमीन पर देखते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ जो भी पानी आता है, दैट इज द मेनली दिस एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन व्हिच फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इन द फॉर्म ऑफ स्लीट, इन द फॉर्म ऑफ फॉग, इन द फॉर्म ऑफ dew, in the form of sleet, etc. Again, what we will see, snow and ice, they also form the two main these what we call as this precipitation on the earth. अब जो land plants हैं, the plants which are found on the land, they take the water from the soil. Land plants, they absorb the water from the soil. And the land animals, अगर हम बात करेंगे, they take the water from the various water bodies like ponds, like pools, like lakes, rivers, etc. This water, as we have already told you, this is very much important for the survival of organisms. For example, अगर हम बात करेंगे, in case of the oxygen dependent organisms, वाटर जो है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. अगर हम बात करेंगे, एक एग्जांपल हम देखेंगे, इन केस ऑफ ऑक्सीजन डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीजन डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स, वहां पर हम क्या देखते हैं कि वाटर जो है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस. This water, now it is of very much significant use to the living organisms, and the way it has been used, it has been utilized by the living organisms. Those uses, they can be categorized into 4 different ways. The water by which it has been utilized, the way by which the water has been utilized by the living organisms, that water जो हम देखते हैं, it has been utilized by the living organisms into 4 different ways. First one, as a solvent. फर्स्ट हम देखेंगे कि वाटर जो है इट हैज बीन यूज्ड बाय द लिविंग एज अ सॉल्वेंट बिकॉज दिस वाटर इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. नंबर सेकंड, एज ए टेम्परेचर बफर, ये दूसरा हम यूज कर लेंगे. थर्ड अगर हम बात कर लेंगे, एज ए मेटाबोलाइट. फोर्थ अगर हम बात कर लेंगे, एज ए living environment.
as a living environment. These are the four different ways by which this water has been used by the living organisms. First one, as a solvent, as a temperature buffer, as a metabolite, as a living environment. Now let us try to discuss one by one. फर्स्ट बात जो मैंने की आपसे, that is water जो है it has been used as a solvent. वाटर की अगर हम बात करेंगे that it attracts both positive and negative ions. वाटर की अगर हम बात कर लेंगे it attracts, इनको अट्रैक्ट करता है both positive ions as well as negative ions. Positive as well as negative ions because of the nature of the chemical bond in the water. Water जो हम बताते हैं that it has been used as a solvent. इसको अगर हम थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, what we will see that water attracts both positive ions as well as negative ions because of the nature of the chemical bond found in the water molecule. अब जो हम ये देखते हैं positive ions, they are attracted towards the oxygen, they are being attracted by the oxygen atom, and negative ions की अगर हम बात करेंगे they are being attracted by the hydrogen atom. It is because of this nature many compound जो होते हैं they are soluble in water. It is because of this nature, that many substances which are necessary for the survival of the organisms that are being, what we will see, that are being dissolved in the solvent. For example, अगर हम बात करेंगे कि कुछ हमारे पास बहुत सारे ये भी हैं ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे, it is what we call as this is soluble in water. This glucose which is very much necessary for the survival of the organism, it is gleaned from the indigested food. जो फूड हमारे पास जो डाइजेस्ट नहीं होता, इससे इस ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. देन दिस ग्लूकोज जो होता है इट गेट सॉल्युबल इन द वाटर. इट इज water is a good solvent, the natural solvent. Then this glucose water, it reaches each and every part of the body. Second जो हम बात करते हैं as a temperature buffer, as a temperature buffer. टेम्परेचर रेगुलेशन अगर हम बात करेंगे, दे प्ले अ वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल. अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि टेम्परेचर रेगुलेशन दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कैरिंग आउट वेरियस केमिकल रिएक्शंस. अगर हम बात करेंगे, दे प्ले अ वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल इन द व्हाट वी कॉल सेल्यूलर एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेंगे, दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. नाउ एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो हम बात करेंगे, एंजाइम्स और प्रोटीन्स दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in carrying out those chemical reactions, they are what we will see that their action अगर हम बात करेंगे, that they are active, that they can act at a particular, at a specific temperature. मैंने
बात की कि टेम्परेचर रेगुलेशन जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैरिंग आउट वेरियस केमिकल रिएक्शंस, या मैं कहूँगा वेरियस सेलुलर एक्टिविटी, जहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी सेलुलर रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग दिस सेलुलर रेस्पिरेशन वेरियस एंजाइम्स और प्रोटीन they take part in carrying out this respiration, but those enzymes they can act at a specific temperature. अगर उस टेम्परेचर में हम देखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, फिर जो हमारी रिएक्शन होगी वो फेल हो जाएगी. नाउ वाटर की हम बात करते हैं. वाटर हैज़ ए हाई स्पेसिफिक हीट रेजिस्टेंस. वाटर हैज़ ए वेरी हाई स्पेसिफिक हीट. कि वाटर जो है इट एब्जॉर्ब्स मच ऑफ द हीट इन ऑर्डर टू रेज इट्स टेम्परेचर. वाटर की एक हम बात देखते हैं कि वाटर जो है ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है इन ऑर्डर टू रेज इट्स टेम्परेचर. सो when we see the reactions are taking place in the organism, जो वाटर होता है it absorbs the heat, ये absorb heat कर लेता है. एंड जब वाटर एब्जॉर्ब हीट कर लेता है इन ऑर्डर टू रेज इट्स टेम्परेचर, अंदर क्या हम देखते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा भी नहीं हो जाता है. दैट इज़ वाई जो एंजाइम्स हमारे जिस्म में होते हैं, जो प्रोटीन्स हमारे जिस्म में होते हैं, दे एक्ट, फिर वो अपना काम आसानी के साथ कर लेते हैं. कि अदरवाइज कि अगर वेरी हाई टेम्परेचर होगा, अगर ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा, दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू कैरी आउट देयर एक्शन. फिर वो एंजाइम एट ए वेरी हाई टेम्परेचर एक्शन नहीं कर सकते. वाटर एज ए मेटाबोलाइट. वाटर एज ए मेटाबोलाइट. The sum total of various chemical reactions which are taking place in an organism, that is called as metabolism. That is called as metabolism. Now, a metabolite, water जो है, it is a metabolite or it is a chemical which is involved in various chemical reactions which take place inside the living organism. अब प्लांट्स और एनिमल्स में हम क्या देखते हैं कि जो ये काम है इट इज समवट डिफरेंट. इन प्लांट्स अगर हम बात कर लेंगे, वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्लांट्स आर इन ए पोजीशन टू मैन्युफैक्चर द फूड. नाउ इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द what we call as this, in the first stage of the photosynthesis, water जो होता है it splits into oxygen and it splits into hydrogen. अब जो ये ऑक्सीजन है it is released into the atmosphere. And अब जो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन, वाटर, अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन या वाटर which is formed from oxygen and which is formed from depleted hydrogen, अगर हम उसकी बात करेंगे इन द इनिशियल प्रोसेस ऑफ हम क्या देखते हैं, वाटर जो है इट गेट स्प्लिट अप, इट splits up into oxygen and hydrogen. Oxygen is released into the atmosphere and hydrogen जो होता है it remains there. Now water जो होता है, water which is formed from oxygen and depleted hydrogen, this depleted hydrogen it is used, वो वाला वाटर हमारे पास क्या कर लेता है, इट इज यूज्ड टू रिमूव द वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी अंटिल द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. अब वो वाला वाटर विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड दिस डिप्लीटेड हाइड्रोजन,
that water, it takes the various toxic or waste products from the body until the process of respiration takes place in plants. Second, in animals, अगर हम बात कर लेंगे, this water is used to split the ATP, that is adenosine triphosphate, into ADP, adenosine diphosphate, and phosphoric acid. In animals, what happens? This ATP, this water, it is used to split up the ATP into ADP plus phosphoric acid. Also, during this process, what we will see, energy is also released. Energy is also released during this process. Energy is also released, and it is this energy which is used by the plants in carrying out the various metabolic activities. So water जो है, it plays an important role as a metabolite. Third, fourth one, water as a living environment. Fourth one, water as a living environment. Of this water, it plays an important role in providing a suitable environment to the organisms, mainly the aquatic organisms, because this water, it is the habitat, it provides all those things which are necessary for an organism to survive in the water. अगर हम बात कर लेंगे aquatic organisms की या aquatic animals की बात, aquatic animals की बात हम कहते हैं कि during the process of respiration, these animals, they need the oxygen. They did not take the oxygen from the air, from the atmosphere, as is in the case of the terrestrial organism. But these aquatic animals or aquatic organisms, they take the oxygen which is dissolved in the water. Animals जो है, aquatic animals, they do not come on the shore of the water body, then they can breathe like we people, like the mammals, like the terrestrial animals, and take the oxygen from the atmosphere. But instead of that, what did they do? They take the oxygen which is already dissolved in water. अगर ये oxygen water वहाँ पर available नहीं होगा, then these animals, अगर हम या फिश की बात हम करेंगे, they will suffocate, and जब suffocation ज़्यादा हो जाएगी, that ultimately leads to the death of those organisms. दूसरी बात, this water, it also acts as an insulator. It acts as an insulating material. अगर हम बात करेंगे उस वाटर बॉडी की जहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेप्थ है पानी की वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल इन सम पॉन्ड, सम लेक, जहाँ पर हम डेप्थ देखें थोड़े बहुत ज़्यादा है. अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहते हैं, दे कैन लिव इजीली इन दैट वाटर बॉडी. अगर ऊपर की सरफेस पर हम देखेंगे, देयर मे बी द फ्रोजन आइस, देयर मे बी द आइस, वो बहुत ही ठंड होगा, लेकिन ये जो डेप्थ में जो पानी होगा वो उतना ठंडा भी नहीं होगा. इट विल बी समवट वार्म बिकॉज दिस वाटर जो है, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड इट प्रोवाइड्स सच एनवायरनमेंट टू द ऑर्गन दैट इट लिव्स व्हाट वी कॉल एज एट ईज इन दैट वाटर. सो वी हैव स्टडीड दैट दिस वाटर जो है हमारे पास, इट हैज़ गॉट इम्पोर्टेंस, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट जो हमने देखी है, दैट इट कैन दोज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा, वाटर एज ए solvent. Second one, water as a temperature buffer. Third, water as a metabolite, and last one, that is a water as a living environment. Now, what are the various adaptations in the what we call as this aquatic organism, that we will discuss. Yeah, that will be discussed in the second video of this
topic. Until then, goodbye. God bless you. Thanks.